जोरदार हंगामा देखने को मिला है राज्यसभा में। सभापति और जया बच्चन में तीखी बहस हो गई है। हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट शुरू हो चुका है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन का आरोप है विपक्ष का माइक बंद किया गया। जया बच्चन विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ये कह रही हैं कोई भी मुझे ऐसे नहीं बोल सकता। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो बार उठते हैं, सांसद उनका अपमान करते हैं, आपत्तिजनक बातें बोलते हैं उनके बारे में और उनको स्पष्टीकरण देने की कोई मौका नहीं दिया जाता। आज भी यही हुआ। एलओपी बोलना चाहते थे पर उनको मना किया गया और बार उन्होंने कोशिश की कि बोलने की कि जो सांसद जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, एक वरिष्ठ नेता 50 साल का उनका तजुर्बा है, अनुभव है, उनके बारे में कुछ बातें कहीं जो बहुत आपत्तिजनक थी पर खड़गे जी को बोलने नहीं दिया। इस रोज एलओपी का ये होना कि वो खड़े होते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है, ये एलओपी का बार अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आज सारे विपक्ष पार्टियों ने वॉकआउट किया है प्रश्नकाल का और हम चाहते हैं कि एलओपी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मौका दिया जाए बोलने का। अभी जया जी बोलिए। जया जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे डरने वाले मेरे पार्टी लीडरशिप क्या देती है और किसी में ये हिम्मत और ये मैं आई डोंट गिव दिस फ्रीडम टू एनीबडी एल्स टू डांटो मी। इट वाज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस बिकॉज कंटिन्यूसली जो बर्ताव हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ, स्पेशली ऑपोजिशन के साथ, आप जो है इतने, आपका जो एक्सप्रेशन, जो टोन है वो इतना खराब है और ऑफेंसिव है कि कितना सहन करें। और जो अपना ट्रेजरी बेंच के लोग हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, बुद्धिहीन बोल रहे हैं और वो जो है अपना उसके ऊपर, अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं।
वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं. I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. सेलिब्रिटी. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ. और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable members. No. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct.